गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ दुबे आप लोगों को वेलकम करता हूं अनअकैडमी यूट्यूब पे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों में बिहार का प्री आने वाला है, साथ ही साथ यूपी जुडिशरी का मेंस भी आने वाला है। चाहे हम बिहार जुडिशरी की बात करें, चाहे हम यूपी जुडिशरी के प्री और मेंस की बात करें, देर आर फ्यू सब्जेक्ट्स विच आर वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर अस। एंड एज जैसे मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन सब्जेक्ट्स पे आप लोग कई बार थोड़ा ध्यान कम देते हो। तो इसी पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए कि आप लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को मिस आउट ना करो, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को आप लोग लूज आउट ना कर दो, नंबर ना आप लोग गवा दो, मैं आप लोगों के साथ क्लास रख रहा हूं जहां पे मैं आप लोगों के साथ अलग अलग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे एडमिन, ट्रस्ट, इक्विटी वगैरह इन सबको डिस्कस करता चल रहा हूं, इन सबको डिक्टेट कराता चल रहा हूं, इनके ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को डिक्टेट करा रहा हूं या डिस्कस कर रहा हूं जो हमारे लिए प्री और मेंस दोनों में काम के हो सकते हैं, जो हमें प्री में भी नंबर दिलवाएंगे और साथ ही साथ हमारे को ये मेंस में भी नंबर जरूर दिलवाएंगे। आप लोगों को बस इतना करना है स्टूडेंट्स कि मेरे साथ सिस्टमैटिकली सारे के सारे टॉपिक्स को आप लोग लिखते चलिए, सारे के सारे चीज़ों को आप लोग लिखते चलिए। एंड मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कहता हूँ कि जब आप लोग का एग्ज़ाम आएगा तो आप लोगों के एग्जाम में इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स में से चीज़ें ज़रूर आएंगी और आप लोग को डेफिनेटली मदद मिलेगी इन सारे टॉपिक से जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब लास्ट क्लास में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गुड आफ्टरनून विवेक जी, गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन करा था बेनिफिशियरी के बारे में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कशन करा था बेनिफिशियरी अंडर अ ट्रस्ट। और बेनिफिशियरी अंडर अ ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो जल्दी से अगर हम लोग याद करें तो ट्रस्ट अपने आप में एक ऑब्लिगेशन है जो कि क्रिएट करा जाता है बाय द ऑथर, जो अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को किसी स्पेसिफिक काम के लिए देता है ट्रस्ट को, जिसको ऑथर ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं। ये किसको सौंपा जाता है मैनेज करने को? उसको बोला जाता है ट्रस्टी। एक तरीके से ही इज द पर्सन हु मैनेजेस एवरीथिंग। एंड ये किसके लिए करा जाता है? दैट पर्सन जिसके लिए सब कुछ करा जा रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज बेनिफिशियरी। सो एक्चुअली जिसके लिए बेनिफिट्स हैं सारे ट्रस्ट के, वो बेनिफिशियरी होता है। अब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि अपने आप में बेनिफिशियरी अंडर अ ट्रस्ट क्या होता है। अब मैं आप लोगों को लिखवाना शुरू करूंगा, या आज की क्लास में जो हम लोग लिखेंगे, अगेन ये सीधे सीधे मेंस और प्री के लिए रेलेवेंट टॉपिक हो जाता है, राइट्स ऑफ अ बेनिफिशियरी। राइट्स ऑफ अ बेनिफिशियरी। मैं सिद्धार्थ पक्का नहीं कह सकता, मेरी कोशिश होगी, अगर आज हो जाता है, नहीं होता तो मैं भी एक आध क्लास और रखनी पड़े बेटा। बिकॉज अगर हम लोग सब कुछ कवर करना चाहते हैं मेरे साथ, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीज आप लोग को अलग से ना करनी पड़े, तो फिर तो मेरे को अभी करने दीजिए, एक आध दो क्लास और करते हैं ताकि पूरा कवर हो जाए हमारा सारा का सारा। एंड यस यस विवेक, मैंने मार्क कर रखा है बेटा, इसलिए वो कीटन वाली जो चीज कह रहे हो आप याद हो, उसके आगे ही मैं टॉपिक बता रहा हूँ। तो आपको सब हेडिंग लिखनी है राइट्स ऑफ अ बेनिफिशियरी। एंड राइट्स ऑफ अ बेनिफिशियरी में हम लोग राइट अवे एक एक सेक्शन के हिसाब से लिखना शुरू करेंगे, एक एक सेक्शन के हिसाब से टॉपिक को लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग डाल लो राइट्स ऑफ अ बेनिफिशियरी। अब क्वेश्चन में कैसे आएगा आप लोगों से मेंस में? आप लोग से मेंस में बिल्कुल पूछा जा सकता है हु इज अ बेनिफिशियरी, एक बेनिफिशियरी आखिर अपने आप में होता कौन है, और फिर उसके आगे आप लोगों से लिखा जाएगा राइट्स ऑफ अ बेनिफिशियरी क्या है वो एक्सप्लेन करिए, उसकी बात हो रही है, लिखिएगा। द बेनिफिशियरी और द बेनिफिशियरी has as such, the beneficiary has as such no estate or interest, no estate or interest in the subject matter under the Indian Trust Act, but has certain rights set out in Indian Trust Act, बट हैज सर्टेन राइट्स सेट आउट इन इंडियन ट्रस्ट एक्ट। तो एज सच प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट कोई मालिकाना हक नहीं हो जाता है, पर कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स जरूर होते हैं, कुछ अधिकार जरूर मिल जाते हैं।
एक एक करके. अंडर सेक्शन 55, अंडर सेक्शन 55, the beneficiary has subject to the provisions the beneficiary has subject to the provisions of the instrument of trust, of the instrument of trust, a right to the rent and profits, a right to the rent and profits of the trust property, of the trust property. So प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं, पर उसके राइट उसके रेंट पे अधिकार हो जाता है. सेकेंड पॉइंट, अंडर सेक्शन 56, अंडर सेक्शन 56, the beneficiary is entitled, the beneficiary is entitled to have the intention of the author, to have the intention of the author of the trust specifically executed, of the trust specifically executed to the extent of his interest, to the extent of his interest. He may, if competent to contract, he may, if competent to contract, require the trustee to transfer, require the trustee to transfer the trust property to him, the trust property to him or to such person as he may direct, or to such person as he may direct. It is permissible to the beneficiary, it is permissible to the beneficiary on the attainment of majority, on the attainment of majority, to have the property handed over, to have the property handed over even though the property had, even though the property had been given to trustee to hold over, been given to trustee to hold over until he attained, until he attained some age over the age of majority, some age over the age of majority.
Point change. Under section 57, the beneficiary has a right. The beneficiary has a right to inspect and take copies. To inspect and take copies of instrument of trust, document of title, accounts of the trust property, and the vouchers, and the vouchers. And the vouchers. Again, change. Under section 58, the beneficiary has, if competent to contract, a right to transfer his interest except, when the property is transferred or bequeathed, for the benefit of married woman, if the beneficiary assigns his interest in the trust fund, he should have notice to the trustee, of the assignment, अगेन पॉइंट चेंज करो. अंडर सेक्शन 59 कोशिश करिए कि जब प्री के लिए रटे ना तो सेक्शन के कीवर्ड्स के हिसाब से रट्टा मार लीजिएगा. की में टिक करने में आप लोग को आसानी होगी, स्पेशली मैं बिहार के लिए यहां पे बात कर रहा हूं. अंडर सेक्शन 59 द बेनिफिशियरी हैज अ राइट, to sue for execution of the trust where no trustees are appointed, or all of them die, disclaim or are discharged
disclaim or are discharged, or where the execution of the trust becomes, or where the execution of the trust becomes impracticable, impracticable. Point change. Under section 60, under section 60, the beneficiary has a right, the beneficiary has a right that the trust property shall be properly protected, that the trust property shall be properly protected and held and administered by, and held and administered by proper persons and a proper persons and by a proper number of, and by a proper number of such persons, such persons. A person domiciled abroad, a person domiciled abroad or an alien enemy, or an alien enemy a person having an interest inconsistent, a person having an interest inconsistent with that of the beneficiary, with that of the beneficiary, a person in insolvent circumstances, a person in insolvent circumstances, a married woman, a married woman and a minor, and a minor are not proper persons, are not proper persons within the meaning of this term, within the meaning of this term. Point change. Under section 61, under section 61, the beneficiary has a right, the beneficiary has a right that his trustee shall be compelled, that his trustee shall be compelled
to perform any particular act of duty, to perform any particular act of his duty as such. As such, and restrained from committing, and restrained from committing any contemplated, and restrained from committing any contemplated or probable breach of trust, or probable breach of trust. Next point, section 62. Under section 62, where a trustee has wrongfully brought, trust property, the beneficiary has a right to have, the beneficiary has a right to have the property declared, subject to the trust or retransferred by the trustee, if it remains in his hands, unsold, if it remains in his hands unsold, or if it had been brought from, him by any person, with notice of the trust, by such person, by notice of the person, by such person, on reconveyance, on reconveyance of the property, the beneficiary is however bound to repay, the purchase money with interest,
and other expenses properly incurred and other expenses properly incurred in the preservation of the property in the preservation of the property under section 63 under section 63 the beneficiary has a right to follow the beneficiary has a right to follow trust property coming into the hands trust property coming into the hands of a third person of a third person inconsistently with the trust inconsistently with the trust इन पॉइंट्स राइट्स को चेंज करके पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा और पैराग्राफ को चेंज करके लिखिएगा सब हेडिंग चाहे नहीं तो ये कंटिन्यूटी में भी चल सकता है ये जो राइट्स है अगर इन राइट्स को छीना जाए इन्फ्रिंजमेंट हो तो रेमेडी क्या है आखिर कोई रेमेडी है या नहीं है ये सारे राइट्स तो हम लोग लिखते चले जा रहे हैं पर इसकी कोई पर्टिकुलर रेमेडी भी तो होनी चाहिए सो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा for every breach of trust the beneficiary has a twofold remedy the beneficiary has a twofold remedy a point और बी पॉइंट ऐसे दो लिखेंगे relief against the trustee himself personally और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं a personal remedy दूसरा relief against the trust property or the property into which the trust property has been converted or proprietary remedy इन दोनों पॉइंट्स के नीचे लिखिएगा द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ ट्रस्टी is of a compensatory nature
and it is enforced against him, and it is enforced against him irrespective of his fraud, irrespective of his fraud, intention, efficiency, or otherwise, or otherwise. Thus a partner trustee, thus a partner trustee employing trust funds in his partnership, employing trust funds in his partnership business is himself liable, business is himself liable in his personal capacity to the beneficiary, in his personal capacity to the beneficiary. Under section 67, under section 67, the personal liability, the personal liability of a trustee in case of, the personal liability of a trustee in case of more trustees than one is, more trustees than one is, joint and several, joint and several, paragraph again change. The proprietary remedies, the proprietary remedies available to a beneficiary, available to a beneficiary are outlined in, are outlined in section 62 to section 66, section 62 to section 66. Where a trustee wrongfully buys, where a trustee wrongfully buys trust property under section 62, trust property, or after wrongfully disposing, or after wrongfully disposing the trust property, or after wrongfully disposing the trust property, he thereafter acquires, he thereafter requires, requires नहीं, acquires the same for himself, the same for himself the beneficiary gets the right, the beneficiary gets the right to trace the property in its, to trace the property in its original character,
original character in trustee's hand, in trustee's hand, where a trustee wrongfully alienates where a trustee wrongfully alienates trust property, trust property, the proprietary remedy lies. The proprietary remedy lies. A beneficiary will have a beneficiary will have charge on the whole fund. चार्ज का कॉन्सेप्ट जो लोग समझते हैं सेक्शन 100 में हम लोग को टीपीए में देखने को मिलता है. Charge on the whole fund where a trustee wrongfully mingles where a trustee wrongfully mingles the trust property with his own. The trust property with his own. Again paragraph change करिएगा. In case of wrongful alienation, in case of wrongful alienation, or conversion of trust property in breach, in case of wrongful alienation or conversion of trust property in breach of trust by a trustee, in breach of trust by a trustee, the beneficiary has a right to recover. The beneficiary has a right to recover the proceeds of the disposition. The proceeds of the disposition of trust property so long as the same is traceable and identifiable. So long as the same is traceable and identifiable. जो नेक्स्ट चीज में लिख रहा हूं उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. द एक्सप्रेशन फॉलोइंग ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ये अंडरलाइन कर लो. द एक्सप्रेशन फॉलोइंग ट्रस्ट प्रॉपर्टी therefore relates to the right of
the beneficiary to follow trust property into the hands of third person or into the hands of another beneficiary or into the hands of another beneficiary or into which it has been converted according to Maitland MAITLAND. This extraordinary right is due to the fact that equity, again ये जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ चाहो तो अंडरलाइन कर लेना, is due to the fact that equity has always been striving to prevent the beneficiary from falling to the level of an unsecured creditor. Under section 63 and section 64, under section 63 and 64, a beneficiary can follow the trust property into the hands of third person. ये जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं ये अगेन मेंस का एक सब पार्ट है, अभी ये सारी चीजें भी हमको डिस्कस करनी है. A beneficiary can follow the trust property into the hands of third person inconsistently with the trust. But the rules of following the trust property does not apply to a transferee in good faith for consideration. चाहो तो अंडरलाइन कर लो. In good faith for consideration without having notice of the trust.
and a transferee for consideration from such a transferee even though with notice of the trust, when the trust property has been conveyed to a volunteer without consideration, the trust estate may be followed into his hands, whether he had notice of the trust or not. Section 64 also lays down that money currency notes etc. cannot be followed. Money etc. cannot be followed. However, under English law, it is not so. The beneficiary has the right to follow money. Into investments or into the hands of trustees, bankers. This right to follow trust property exists or is in an identifiable state or can be earmarked, pointed out basically. Earmarked या identifiable का मतलब होता है चिन्हित करा जा सकता है, or can be earmarked, where a trustee first sells
where a trustee first sells wrongfully, wrongfully, or converts the trust property and then becomes an owner of the same and then becomes an owner of the same by acquiring it the property so acquired will again become subject to the trust under section 65. Under section 65. Further, where the trustee wrongfully mingles the trust property with his own, the beneficiary is entitled to a charge. The beneficiary is entitled to a charge on the whole fund for the amount due to him. While under English law the beneficiary can claim every portion of the mixed fund which the trustee cannot prove to be his own. Under section 66 of the beneficiary is entitled to a charge. पैराग्राफ चेंज करिएगा. The underlying principle is
The underlying principle is in equity the beneficiary is sole. In equity the beneficiary is sole. An absolute owner. An absolute owner. And the court will not permit a person and a court will not permit a person solely and absolutely entitled solely and absolutely entitled to be subjected to the interference of a trustee. Interference of a trustee. The court in fact regards the court in fact regards a trustee as kind of an intermediary. A trustee as kind of an intermediary whose office is to hold the scales. Whose office is to hold the scales evenly and to see that the rights of several persons are mutually respected. But when there is only one person interested, but when there is only one person interested, and that person is sui generis, sorry, sui generis, nahi, sui juris. The trustees' reason to exist, the trustees' reason to exist ceases to exist, ceases to exist. And consequently he himself becomes, and consequently he himself becomes merely a person in the legal possession
merely a person in the legal possession of another person's estate, as was defined by Underhill, as was defined by Underhill. ओके, आई जस्ट रियलाइज्ड कि हमारा टाइम एक्चुअली खत्म हो चुका है. अभी मैंने आप लोग को लिखवाया ये टॉपिक, बट अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है. नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग ट्रस्ट के लिए मिलेंगे, प्लीज आप में से जो लोग रेगुलर अभी कर रहे हैं मेरे साथ ट्रस्ट की क्लास, मुझे रिमाइंड कराइएगा, क्योंकि आज तो हम सिर्फ लिखते रहे और एक्चुअली 1 घंटा थोड़ा कम भी होता है लिखने के लिए. सो हम लोग लिखते रहे, हम लोग सिर्फ बेनिफिशियरी से रिलेटेड कुछ ही पर्टिकुलर चीजें लिख पाए हैं. नेक्स्ट क्लास में व्हेन वी स्टार्ट, तो मेरे को रिमाइंड करा देना, मैं थोड़ा आपको शुरू में पहले एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इसमें हमने ना मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा है. बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट अभी हमने लिखा है, ये जो फॉलोइंग ट्रस्ट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट होता है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यस विवेक, इट्स अ नेम. सो अभी के लिए मैं क्लास को रोक दे रहा हूँ, और आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्रस्ट की क्लास में, जो मैं आप लोग को ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा. तो जो लोग नहीं जानते हैं कि कब उनको टाइमिंग पता रहने चाहिए, सो UA सिड दुबे, ये ग्रुप है मेरा, @UA सिड दुबे. टेलीग्राम पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. इससे आपको पता चलता रहेगा कब मेरी फ्री क्लासेस हैं, कब मेरी पेड क्लास हैं, कब यूट्यूब पे क्लास है, वगैरह वगैरह. ये आप लोग के लिए काम का हो जाता है. साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि 6 से 8 अप्रैल हमारा एक बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है, जहां पे आप 1 ईयर का अपना सब्सक्रिप्शन का पेमेंट करेंगे और आपको एक्चुअली 2 साल मिलेंगे. सो आपको एक्चुअली देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो 50% के आसपास आपको मदद मिल जाएगी अगर आप हमारे साथ 6 से 8 में फीस का पेमेंट करते हैं और अनअकैडमी को हमारे साथ ज्वाइन करते हैं. ये याद रखिए कि अनअकैडमी पे हमारे बहुत सारे अलग अलग ऑफर स्टार्ट होते रहते हैं, जहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ अब अनअकैडमी अपना ऑफलाइन अनिल खन्ना सर के साथ स्टार्ट कर रहा है बैच, जिसकी स्टार्टिंग होगी 5 जून से. अगर आप चाहें तो आप इसकी फीस का सबमिशन कर सकते हैं, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं. आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, लेक्सलोसाई, LEXLOCI. इसके कोड को यूज करने से आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे जब आप ज्वाइनिंग करेंगे. याद रखिए ये चंडीगढ़ में बैच स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को अपना डिसीजन लेना होगा. अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बहुत सारे अलग अलग बैचेस चलते रहते हैं. आप किसी भी बैच को हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी बैच में हमारे साथ आ सकते हैं और क्लासेस कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की इन डेप्थ तैयारी होती चले जुडिशरी की. मैं फिर रिमाइंड करा दूं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग का किसी तरीके का कोई सवाल है तो आप टेलीग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं. टेलीग्राम पे मुझे रीच आउट करने का तरीका है सिंपल, मेरे नाम से @सिद्धार्थ दुबे. आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. अभी के लिए मैं इस क्लास को यहीं रोकता हूं स्टूडेंट्स. आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय एंड टेक केयर.